Hello, guys. Welcome to the new episode of TFG Fantasy Sports. My name is Nikhil. I have Vivek Krishnan with me on the Skype, and today we are looking at one of the biggest rivalry in cricket. And the match is going to happen at Lords. So England is taking on Australia. Kabhi kabhi. Yeah, I think this is a preview to the Ashes, the biggest, as they say, India Pakistan is the biggest rivalry. I disagree because there is a lot of politics involved. But with Uh, Australia and England, there is no politics. It is pure sporting rivalry, and that yeah, is what I love. and that And too at now Lords. everybody knows that too at Lords, the home of cricket. Uh, So yes, very excited, and this is very interesting, Nikhil. The reason I say that is because England are hosting. hmm, England have lost two games that they should have won against Sri Lanka, Pakistan. hmm, They are under pressure. hmm. They have to win the next. I think they have to win at least one match to secure their semi position out of three, which they will. Okay, but on the Against other whom? side there is Against whom? Australia. Against whom? Because they are playing against Australia, India, and New Zealand. Precisely, precisely. Yeah. So given the side England is, they will surely win one out of the three, right? Unless something very bizarre happens. Hmm, Okay. So that is on one side. The other side, Australia, hmm. almost in the semis. Even if they don't win any, I think they are in the semis. And suddenly now Australia are going to put so much pressure on England. सही बात है. So had England not lost that match against Sri Lanka, I would have said England overwhelming favorites है. But because अभी इतना pressure है ना, it's a Hmm. पन्नास पन्नास game. पन्नास पन्नास गेम हाँ बट आई टेल यू व्हाट इंग्लैंड बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया वो श्रीलंका वाला मैच क्लियरली ऐसा मतलब इट वाजंट अ फॉर्मिडेबल हाँ यार, परफॉर्मेंस I mean that's I I think आई मीन नो saying डिसरिस्पेक्ट टू मलिंगा irrespective of his size and shape he bowled absolutely a brilliant spell but then but England are Besto known was to not out. Number one, Besto was not out. I think if there is someone to be blamed, Moin Ali को blame करो. The shot that he played was so unnecessary after that six. Like hmm, Stokes and Ali at the crease, 5 wickets or 4 wickets in hand, less than runner ball. What hmm. was the need, man? Yeah. So, and I said that England are actually behaving like good hosts. They have treated two pathetic teams with so much kindness. Hmm, hmm. Obviously, that is Sri Lanka and Pakistan. Okay, okay, चलो अब let's बांग्लादेश को वो लोग ने काइंड ट्रीट नहीं किया, सो पैथेटिक टीम में बांग्लादेश भी है. चलो. Right. पर हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात ही नहीं करेंगे है कि नहीं सुपर पैथेटिक है. राइट राइट सो जैसे हमारा ये फॉर्मेट है वी फर्स्ट लुक एट द इंजरीज बट इंजरीज यू नो आई मीन दिस इज वेरी वेल नोन दैट जेसन रॉय इज स्टिल नॉट फिट and he Hmm. won't be, so we won't spend much time in injuries. I don't think there is anything from the Australian camp. Everybody is fit and will be taking up the field. Yeah, uh even Stoinis played in the last game, so yeah. no real injury concerns. Yep. So top pick from England अपने को तो क्लियरली दिख रहा है कि जो रूट जोफ्रा आर्चर बेयरस्टो Yeah, yeah. why Straight why is away, straight away. why is Bearstow top pick? The reason being, obviously, he's going to he's going to open the batting. And yes, last two games he's not done well. But you just look at his overall record, last 10 innings, what he has done in this format. And Hmm. he's a set guy, Nikhil. Once आपने देखा होगा, he gets through 20-25 runs, Hmm. goes on to make a big one here. So I like the stability in him. And what I also like is when Root and Bairstow get together, Hmm. partnership, Hmm. that is an ominous sign for the opposition. हमने ये बहुत देख लिया है. Yep. So and against Australia, this could be a build-up for the Ashes. And okay, Australian bowling अरे lineup looks before pretty good. लेकिन यार मेरे को लगता है अगर बांग्लादेश 350 मार सकती है, so I think these two guys can definitely take advantage. yeah definitely but you know तुम बार बार एशेस एशेस का नाम ले रहे हो इन लोग नॉकआउट्स में भी मिल सकते हैं बाद में हाँ बिल्कुल उस हाँ बिल्कुल. Who knows 1-4-2-3 का क्या कैलकुलेशन होने वाला है, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना अपने को. अच्छा इट इज 1 4 and 2 3 ऐसा है 1-4-2-3, हाँ. अच्छा बट अच्छा उसमें भी पता नहीं ना कौन कहाँ पहुंचने वाला या है. हाँ वैसे इंडिया का वो जो हैंड इन मैच जो है ना सॉरी मैच इन हैंड मैच तो इन हैंड. हाँ उसकी वजह से है ना वो कैलकुलेशन करना पूरा प्रॉब्लम हो रहा है बट एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बिकॉज सेमीफाइनल यू हैव टू विन अगेंस्ट एनीबडी यार. हम्म तो सबको प्रेशर होने वाला है.
So it really doesn't matter. But yeah, England, Australia can meet again. Okay. Yes. Chalo, tell me one pick from England which is not so, you know, kind of a black sheep Allah. जो तुम One. फैंटेसी में लेके खेलोगे, Hmm. क्योंकि सब तो 10 8 10 9 9.5 के है, 8 वाला But भी कोई Nikhil, that is the problem. See, I'll pick Moeen Ali definitely. वापस. Because I mean, ठीक है यार, but एक मैच उसने गलती करी, but that doesn't mean he's a bad player, right? Why not So, Adil Rashid? because I firmly believe Adil Rashid is only meant to bowl to the weaker teams. Now, why Okay. do I say that? Hmm. So, why people, शायद जो भी हमको सुन रहे हैं सोचते रहेंगे ये क्या अजीब बात बता रहा है. You go back and Hmm. see. So I don't have to go back and see the stats. What I've seen is the matches, the way Adil Rashid bowls. Adil Rashid is becoming a very predictable bowler, unlike Imran Tahir, Yuzvendra Chahal, and even Rashid to a great extent. Hmm. Because where Rashid is getting all his wickets is batsmen who are unable to read him, Hmm. or batsmen who go after him. Hmm. पीपल हु आर रेडी टू टेक 5 6 एन ओवर उसमें रशीद को विकेट नहीं मिलता. Hmm. ये मैं स्टैट एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा, ये मैं मैच एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ जो भी मैंने देखा है. सो आई फील दिस गाय रशीद is not likely to pick more than a wicket or two in against Australia because Will he Australia. play? Adil Rashid will play. Adil Because Rashid will get. Plunkett would be fit, I guess. That's correct. That's correct. But I think England always like to have that one spinner for sure. That is Adil Rashid and Moeen Ali तो रहने ही वाला है. जो रूट भी And है. but Joe Root against Australia, I'm not very sure कितना overs मिलेगा. He's a partnership breaker. Look, he's a partnership breaker. He's a bit of Kedar Jadhav. Hmm. So look, Adil Rashid, like I said, he might pick wickets, but I am not convinced. एज अ लेगी मेरे को नहीं लगता वो कुछ कर पा रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पिकिंग हिम. ओके, जाने दो, कल जाके 4 विकेट लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट Okay. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे को लगता है. अगर आपको लगता है कि रबिश डाल के विकेट मिल के 6 ले लिया तो ले लिया, चलो ठीक है. आई सेड Okay. द सेम थिंग अबाउट दैट वर्स्ट बॉलर. आज वो खेल भी नहीं रहा है, सो दैट्स ओके. Okay. Let's move on to Australia. Topics would be Warner, Finch, Stark. Definitely, Stark has how many wickets, man? Almost 10 plus wickets in this World Cup. That is a Yeah. staggering strike rate, Nikhil. Hmm. He can be expensive, but you must have seen, आप देख रहे हो, वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो. एक Hmm. स्पेल आता है जहां पे वो 2 3 विकेट ले लेता है, झट से ले लेता है निखिल. Hmm. He did that against West Indies, against Pakistan, against Sri Lanka. तो अच्छा बॉलर है यार. आई मीन जबरदस्त बॉलर है. कमिंस आई थिंक जितना कर सकता है वो नहीं कर रहा, नहीं लगता तुमको भी? Yeah, true. है ना? True that. Yeah. और कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि कोल्टन आयल, रिचर्डसन सब बॉलिंग अंडर पार है निखिल. ऐसा लग Hmm. रहा है मेरे को. जस्ट Hmm. फील. सो व्हाट आई आल्सो देखो, फील इज. पिच तो वैसे बैटिंग बैट्समैन को ही फेवर कर रहे हैं, उसमें से स्टार्क ऐसा कम आउट लाइक अ ग्रेट बॉलर. Correct, correct. हम्म. And of course, there is Nathan Lyon, there is Adam Zampa also. हम्म. And मुझे ये भी लगता है कि against England, they should play both. They should play both and rest one of Coulter Nile or Richardson. हम्म. Why I say that? Because if you look at England's batting, हम्म. lefty righty बहुत shuffling होता है. हम्म. So they start with two righties. हम्म. Then Root is a righty again. Hello? या कंटिन्यू. Yeah, yeah. And then suddenly 4 5 6 3 lefties in a row. हम्म. That is Moeen Ali, Ben Stokes, Morgan. You put a Butler in between. हम्म. So जब इतना shuffling होता है, you हम्म. also need a off spin bowler. I हम्म. don't know if Australia are listening to me, but if cricketing logic पूछो तो ये होना चाहिए. I हम्म. think it is time Nathan Lyon plays because when you have a and Zampa is a damn good spinner, man. When हम्म. you attack with these two spinners with so much lefty righty, they can put England under tremendous pressure. ओके. Yes, ओके. तो गैस हम, that's my logic. Yeah. या तो हमने टॉपिक्स देख लिया है फ्रॉम इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड टू कंप्लीट द 11, दिस इज आवर टीम. Yes. Okay, we have best obviously, मतलब there was no two thoughts about it. But last time Hmm. तुमने किधर कोई तो मैच में ना एलेक्स कैरे को लिया था.
Mm, Alex, so before we get to Alex Carey, let's run through the team first. okay, Then हम जिनको नहीं लिया उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे. cool. So we have Basto as a keeper, Warner, Finch, Morgan, वॉर्नर Root. फिंच तो निखिल स्ट्रेट अवे यू हैव टू पिक देम. इतना जबरदस्त फॉर्म चल रहा है दोनों का. ओपन करते हैं, पावर प्ले में रन्स मिलता है, एंड Hmm. appears that Lords is going to be a decent wicket. Pakistan scored 300 Hmm. runs, man, almost. So yeah, I think these two are going to be very crucial. Yeah. In Then you order. have then you have Morgan, who is a crisis man, and Hmm. जो रूट 400 रन मार दिए यार इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी. True. और क्या चाहिए. Yeah. It's completely. ऑलराउंडर की बातें भी हम करेंगे. सो इनफैक्ट इधर मेरे को प्रॉब्लम आया है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेल आवर लिसनर्स कि ये क्यों प्रॉब्लम एरिया है. Hmm. मोइन अली अगेन इज अ बिट ऑफ अ बजट पिक, प्लस वी फील थोड़ा बैटिंग थोड़ा बॉलिंग. Hmm. स्टार्ट के बारे में जिक्र कर दिया. वोक्स इज गोइंग टू ओपन द बॉलिंग. वोक्स इज गुड एट द डेथ. एंड जोफ्रा आर्चर को तो तुम्हें लेना ही. ही हैज टेकन 15 विकेट्स मैन इन दिस Yeah. वर्ल्ड कप. Yeah. Barring one match, Nikhil, Hmm. every other match he has taken 3-3-3-3. Yeah. True That is that. outstanding ना. Hmm. मतलब एक एक टाइम था, एक टाइम कई साल पहले लसित मलिंगा ये करता था, याद है तुम्हें? हाँ. Yeah. Yeah. Of course. Yes. So this is what Archer is doing. So it's Yeah. a, Is Archer also a Kolpak guy? Ki. no, he's not a Kolpak guy. He's Okay. from he's basically from West I Indies. think from Barbados. Barbados. Yeah. Yeah, he's from Barbados, and then he moved to England full Hmm. time. Hmm. गुड मैन, व्हाट अ पिक इंग्लैंड के लिए. Yeah. और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्लाइटली ऑफ टॉपिक है, लेकिन इफ यू जस्ट गो एंड सी जो लेट एंट्रीज हुए ना वर्ल्ड कप में, मतलब लास्ट मोमेंट पिक, वो सस्पेंस पिक, वो ट्रम्प कार्ड कहते हैं. हाँ. इंग्लैंड ने आर्चर को लिया सबसे हाँ. लास्ट. हाँ. देखो कमाल कर गया. Yeah. पाकिस्तान ने मोहम्मद आमिर को लिया. देखो बंदा Yeah. कमाल कर True. गया, है ना. Malinga. एंड Malinga was always there in the team. I'm saying Is it? ये Okay. लोग हाँ, Malinga was always in the 15. I'm saying 15 में जो नहीं थे निखिल, हाँ. जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड आया था, याद है 23rd के पहले हमें Yeah. डिक्लेयर करना था Yeah. सब को, ये दो नाम नहीं थे. Hmm. तो इस ठीक है. लॉजिक से ऋषभ पंत इज आवर नंबर 4 देन. अब मैं उधर तक जाना ही नहीं चाहता. And also a reason that ये मैंने छेड़ा ये टॉपिक, एंड गुड you actually captured it very nicely. तो yes, but नहीं, मैं बोलने वाला था कि इंडिया का बैड लक देखो. ठीक है. Hey, anything about Glenn Maxwell and Stoinis? मतलब aren't there any पंगा better है. players? पंगा हाँ है यार, पंगा हो गया निखिल. सो इधर ही हम कैरी को भी लेके कवर कर देते हैं. Hmm. सो आई गॉट इनटू अ पोजीशन वेयर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लिमिटेड बजट ऑब्वियसली, टू बिग टीम्स, कि मैं क्या करूं. Hmm. मेरे पास ऑप्शंस थे. आई कुड हैव गॉन फॉर कमिंस, ठीक है, Hmm. बट 9 पॉइंट्स का है, ठीक है. Hmm. और फिर मैंने सोचा मेरी बैटिंग बहुत पतली हो रही है. Hmm. So I wanted to strengthen my batting because imagine for some reason Australia are 34-2, दोनों Hmm. ओपनर चले गए, Hmm. फिर तो हमारे पास कोई नहीं है ना. Yeah. True. Okay. So yeah, so I just felt that okay, we need some depth, and also Maxwell Stoinis ने हर मैच बॉलिंग कर रखी है. Hmm. Yeah, that's true. Maxwell alone has bowled 10 overs. स्टॉइनिस ने भी डाला है, एंड ये दोनों मेरे को नीचे एक क्वेश्चन भी देता है. Hmm. हालांकि मैं कुछ चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ. Hmm. सो दिस इज प्योरली अ जबरदस्ती पिक. मैंने ये भी सोचा कि स्टॉइनिस की जगह शायद कैरी ले लूं, Hmm. शायद कैरी ले लूं. यू कैन स्टिल गो विथ हिम क्योंकि एक दो कैच पकड़ लेता है, सेंसिबल बैटिंग करते हैं निखिल, राइट. Hmm. Hmm. बट आई वेंट फॉर स्टॉइनिस बिकॉज ही माइट बोल. दैट्स Okay. द ओनली लॉजिक. Okay. Because then there is one more player that I wanted to pick, and जो मुझे लगता है कल आप कैप्टन बना के खेल लो, वो है स्टीव स्मिथ. Hmm. आप देख रहे होंगे Actually, हमारी टीम स्टीव yeah, स्मिथ. मैं बोलने ही वाला था अभी. Hmm. यस, ये सब एक्चुअली इसे कहते हैं ना, someone is a spoiler in the squad, and that spoiler's name is Usman Khwaja. Okay. Yeah, because what Australia are not realizing is by not giving Smith to bat. Hmm. Okay, स्मिथ ऐसा नहीं है कि 200 गेम खेल के आया है, एक साल बाहर बैठ के आया है. Hmm. तुम उसको गेम नहीं दोगे, चांस नहीं दोगे, तुम ख्वाजा को भेजोगे, यू आर जस्ट मेकिंग एन इनफॉर्म बैट्समैन गो आउट ऑफ फॉर्म. This Hmm. is a crime. Don't do it. He is Hmm. best suited at number 3. He's the Virat Kohli and Joe Root and Kane Williamson of Australia. Australia. Yeah. खिलाओ, ऊपर बैटिंग कराओ. अभी हमारे पास बजट नहीं है, तो मैं उसको Hmm. ले.
But I feel if you have to pick a team, pick Smith, make him the captain. ओके ओके सो Yes, अभी that's तो the हमने कैप्टन रूट और वाइस कैप्टन वार्नर को रखा हुआ है. yes. हाँ, क्योंकि अगर हम कल स्मिथ लेते हैं और फिन छोड़ते हैं तो लोग ये सोचेंगे अरे यार ये तो बड़ा फॉर्म में चल रहा है, ऐसे क्यों कर दिया इन्होंने, है कि नहीं निखिल? या ट्रू. सो दैट्स व्हाई. ओके सो देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू. तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग 6-6 टीम के साथ खेलते हैं. तो या this is a good bet to have. But obviously Smith will be a highly picked player यस. in this encounter. तो फाइनल कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड? England. Ah, England will win this. England will win this, Nikhil. Yeah, दे दे they दे. are too good a team to not win this match or even get into the semis. Let me say that. Yeah, too good a team. Too good team. I think they will not win tomorrow. They will beat Australia handsomely. That's my feel. कल झटका है देखो इंग्लैंड को. हाँ देखो, अगर होता है तो ठीक है. देन इंडिया एंड देन न्यूजीलैंड. ऊपर से न्यूजीलैंड को लगता है. ऑयन मॉर्गन ने वापस एक एरोगेंट कमेंट मारा है तो वो 100%. मैंने देखा था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट. यू आर टॉकिंग अबाउट आर्चर वाला ना, जो सवाल आया था. उस हाँ नहीं, वो तो पहले वाले मैच में ना, दैट हाँ, वाज. अच्छा, ओके ओके. हाँ, अभी अब उसने क्या ही हुआ? नहीं, ही स्पोक अगे मतलब देयर वाज अ स्मिथ वाला. क्वेश्चन. स्मिथ वाला, स्मिथ वाला. या हाँ, या वो मैंने देखा. हाँ, दैट दे कैन एक्सपेक्ट होस्टाइल क्राउड, वो सब. एरोगेंट नहीं है देखो. एज see, अ कैप्टन there is दैट. there is a there is a good way to handle such kind of questions without saying anything about the player, but Totally agree with what you uh, said. He should have handled it the way सरफराज अहमद ने आई थिंक एक अच्छा काम किया वर्ल्ड कप में. वो सवाल का सही जवाब दिया उन्होंने, बहुत अच्छे मैच्योरिटी से हैंडल किया. वो सोशल मीडिया वाला. हाँ, नहीं, हाँ ये जो वार्नर स्मिथ के बारे में बात हुआ था, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. हाँ. बट लुक, बिकॉज इनका क्या है, दिस इज ऑलरेडी बिल्ड अप टू द एशेस, ठीक है, एंड हम्म, इंग्लैंड वांट टू रब दैट इन नाइसली. एंड आल्सो व्हाट यू हैव टू सी इज हु इज अंडर प्रेशर. हम्म, इंग्लैंड इज अंडर प्रेशर. तो या उनको ये बातों बातों में दबाना है ऑस्ट्रेलिया को. या वहां पे वार्नर ऑफ द हाँ, फील्ड इसका आई गेस माइक हसी का और ग्राहम स्वान का बहुत बैंटर ये चल तो रहा चलने ही वाला है, ये तो है. चलने ही वाला है. होने एक्सपेक्टेड एंड इट इज गुड फॉर द गेम, गुड फॉर द वर्ल्ड कप, गुड फॉर द प्रोडक्ट, गुड फॉर फैंस लाइक यू एंड मी बॉस. Yeah. मजा आएगा ये देखने में. बट आई स्टिल फील इंग्लैंड हैव द एज टुमारो. यस. Right, right. Let's see, let's see. So, guys, on this note, we'll close the screencast over here. कुछ भी यस. डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए. और हमारा आर्टिकल तो ऑलरेडी अप है, सो फॉलो अस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, फॉलो अस ऑन ट्विटर at TFG Fantasy Sport. Till then, bye bye. बाय.